वेलकम बैक टू चैनल एवरीवन। आई होप यू आर डूइंग एब्सोल्युटली फाइन। मैं ये हेलमेट बार बार लेके क्यों आता हूँ आपके सामने? नाउ व्हाई आई एम हियर विद दिस हेलमेट इज़ दैट ये मेरा चिन माउंट था, चिन माउंट गिर गया। डोंट वरी, माई गोप्रो इज़ ऑल्सो सेफ। अभी क्या हुआ, ऑन माई लास्ट राइड आई वॉज नॉट रिकॉर्डिंग। मैं बाइक से जा रहा था एंड देयर वर सम पॉट होल्स इन अराउंड बैंगलोर, जहाँ पे मेरा बाइक थोड़ा ये हुआ, जंप किया एंड देन टायर चिन माउंट खुल के गिर गया। लकीली देयर वाज नो व्हीकल ऑन द बैक साइड, नहीं तो मेरा चिन माउंट का छोड़ो, मेरा गोप्रो जो महंगा है, गोप्रो हीरो 4, पूरा स्मैश डाउन। इस बीच में, इस दौरान में मेरा क्या लॉस हुआ इज दैट देयर वाज अनदर कवर विच एक्चुअली ब्रोक एंड थैंक गॉड माई गोप्रो वॉज अनटच्ड। मैं बच गया हूँ। आई वॉज वेरी लकी एंड आई वॉज वेरी हैप्पी। सो अभी मैं क्या किया हूँ, नाउ आई हैव परचेस्ड दिस। व्हाट इज दिस? दिस अ टैग, it's a safety tag which will hold my GoPro and the GoPro stand in case there is a fall. ये अगर खुल के गिर भी गया, at least with this 3M tape and with this ये ऐसे लग जाएगा। लगने के बाद it would be perfectly fine. At least ये टैग के साथ मेरा GoPro लटक जाएगा, गिर नहीं जाएगा रोड पे। So that's the reason I wanted to show you guys. And another thing is that अभी मैं इसके साथ एडल राइट भी लगा दूंगा, सो दैट ये मेरे पास तो ऑलरेडी ग्लूज है ही। आई हैव दिस 3M टेप्स जो मेरा पहले में कोई चीज़ों से मुझे मिलता था। सो आई पुट दिस अलॉन्ग विद दैट, आई पुट द एडल राइट, जिसकी वजह से इट वुड परफेक्टली फाइन इवन इन एनी केस। अगर थोड़ा भी अगर फॉल हुआ तो एटलीस्ट दिस टैग विल हेल्प द GoPro टू स्टैंड, नॉट फॉल ऑन द ग्राउंड। चलो लेट्स गो एंड डू दिस। पहले तो व्हाट आई विल डू इज दैट, इसमें एडल राइट में क्या रहता है, एडल राइट में दो तरीके का ग्लूज होता है। वन इज अ क्विक फिक्स, वन इज अनदर वन, आई डोंट नो। ब्लू और वाइट को मिक्स करके बनाते हैं, आई डोंट नो द एग्जैक्ट नेम। सो व्हाट आई विल डू इज दैट, चिन माउंट, काम से मतलब मेरा भाई से स्मेल से क्या, स्मेल तो 2 मिनट का है। थोड़ा सा ये ग्लू भी लगाते हैं। खीरा खा रहा हूँ, नथिंग एल्स। सो नाउ आज इट इज़ एग्जैक्टली 1 डे आफ्टर विच आई इनिशिएटेड दिस व्लॉग, क्योंकि कल मैं क्या कर रहा था, यू ऑल सॉ इट। मैं यहाँ पे ग्लू लगाया था, एडल राइट, फेविक्विक, जो मुझे मिला यहाँ पे लगा दिया मैं। अभी भी हल्का सूखना बाकी है बिकॉज जस्ट नाउ आई पुट सम एडल राइट ओवर हियर अगेन बिकॉज आई डोंट वांट वंस अगेन द माउंट फॉलिंग ऑफ। यहाँ पे हाथ रखो अपना। So now the next part what I'm going to do is that, as I said you, this the safety one. ये safety वाला टेप लगाते हैं यहाँ पे, which is important. So what I'll do is that एक तरफ का स्टिकर हटाते हैं and ये इसके पीछे चला जाएगा। That's it, ये लग गया। Now ये this part I would be pasting 3M का टेप निकालना बहुत मुश्किल होता है, which is very good. Now I've removed this और मैं इसको यहाँ पे स्टिक कर दिया।
this I've put it over here. इसके अंदर से ये वायर चला जाएगा. It's not a wire exactly. This is somewhat प्लास्टिक का रोप है, करेक्ट. तो ये रोप ऐसे चला गया एंड नाउ ये टैग अप मुझे मिल गया. A few moments later. So almost around half an hour to 45 minutes of R&D. I finally did it. Now the GoPro microphone is over here and the inside my chin mount is somewhere over here, I guess. If you guys can see, I don't know if you can see or not. The chin mount is right inside over there behind the pads of the side chin. And yeah, the cord is over here, and which I would be putting it along with the camera. So I hope you like this vlog, because I wanted to show you guys, because you need to safeguard your GoPro camera or SJ camera, whatever camera, action camera you use it, because these cameras are very expensive. If it falls down, it's bad luck. So we need to be very careful on the safety features by putting this one. This one I purchased it online. This hardly I paid 198 rupees, and which is nothing actually for the safety purpose. So I hope you like this vlog. If you like this vlog, please don't forget to give this video a like and do subscribe to my channel. With this said, Raj signing off. Do take care. God bless you. Bye bye. I'll see you very soon on a brand new day with a brand new vlog.